Hello friends, welcome back to the series of lectures. This is the 24th lecture of this series of Indian Constitution. And in the previous lecture, we are continuing with the Article 12. And in this, we would start whether the judiciary is state or not. You see, the fundamental rights, DPSP, and the other provisions are talking about powers to make the law and take executive action. And since judiciary does not have that power to make the law and take executive action, so by that way it cannot be considered to be a state. So that is one point. क्योंकि जुडिशरी लोगों के ऊपर डायरेक्ट एक्शन नहीं लेता है, जुडिशरी के पास केसेस जाते हैं और उन केसेस को जुडिशरी डिसाइड करता है. Judiciary directly not dealing with the people in the manner as the executive and legislature does. Legislature make the laws and the executive implement the laws. So they had got the direct dealing with the people, but judiciary does not do that. It is only when the dispute is there and the case is taken to the court, then the court will decide the cases. The court has the function primarily of interpretation of the laws and deciding on the cases. So in that way we can say that the judiciary is not directly dealing with the people as such, and therefore it will not be a state. But a question arose कि जब जुडिशियरी केसेस डिसाइड करती है और एक केस को wrongly means in deciding the case by the judiciary a wrong decision is made or malified decisions are made, then will it not violate your fundamental rights? And if it does, then should not the judiciary be a part of the state? Judiciary does not deal with the people directly because it does not have the legislative or take the legislative or executive action. That is fine. It judiciary interprets the laws and decide the cases, and therefore you can say that it is not state. But what about the wrong decisions in the cases? Malified decisions in the cases. If the court decides the cases wrongly, then your fundamental rights may get affected. And if it does, then should not the judiciary be a part of a state? So by this argument, you can say that the judiciary should be state, but Supreme Court rejected this argument, and Supreme Court clearly said that it is not state. In the case of A.R. Entule versus R.S. Nayak, 1992 Supreme Court, write down this case. In this, the Supreme Court said that judiciary is not a state, while it is doing its judicial function. So write down judiciary in judicial function is not a state, but in its administrative function it is state. So judiciary is not a state while it is doing its judicial functions, but when it is doing its administrative functions it is a state. It is considered to be state. अब इस पॉइंट को हमको समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल फंक्शन में जुडिशरी को स्टेट क्यों नहीं बताया और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में वाई आर कॉल्ड इट ए स्टेट. तो इस केस में कहा है कि जुडिशियल फंक्शंस में जुडिशरी इज नॉट स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में इट इज स्टेट. अब पहले तो आप फंक्शन समझ लो. एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या होगा जुडिशरी का? फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इज अपॉइंटमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टाफ, द रीडर्स टू बी अपॉइंटेड. तो इस तरीके का जो अपॉइंटमेंट होता है विच इज इन द हैंड्स ऑफ जुडिशरी, स्टेट करे या हाई कोर्ट करे वॉट एवर. देन रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ द स्टाफ, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी फंक्शंस हैं कोर्ट के. वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में कोर्ट केस तो डिसाइड नहीं कर रहा. इट इज अपॉइंटिंग ए पर्सन एंड रिमूविंग ए पर्सन, एंड इन डूइंग सो it may give an unequal treatment, and that would be violation of Article 14. It may violate the Article 21 right to life and personal liberty, and so forth. It may violate the principles of natural justice. जैसे किसी भी स्टाफ को हटा दिया लेकिन उसको हियरिंग नहीं दिया. So in those cases when it is performing its administrative functions, and since the court is not deciding the case, the court is behaving like any other normal person who may appoint, who may remove, and may violate the principles of natural justice. So administrative function में there is all probability that the state acts as entrepreneur. State here means court.
it appoints, it removes, it fixes the salary, and so forth. And there are all possibilities that it may violate the fundamental rights. अब वहाँ पे since it is not a judicial function, it is normal administrative function, and the possibility of violation of fundamental right is always there, and therefore in the administrative function the state will be considered to be, the state will include the judiciary, or the judiciary will called to be the state. और चूंकि लिखा नहीं है कहीं पर, तो ये जो अदर अथॉरिटीज हैं ये तो कहीं लिखा नहीं है कि जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में स्टेट होगा आर्टिकल 12 में. सो अदर अथॉरिटीज के थ्रू यू विल से दैट जुडिशियरी एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वुड बी स्टेट थ्रू द वर्ड्स अदर अथॉरिटीज. बट एज फार एज द जुडिशियल फंक्शन इज कंसर्न, it is not a state, then why it is not a state? See, what you have to appreciate is, किसी भी कोर्ट की बात करते हैं हम, you talk about any trial court, judicial magistrate और मे बी a civil judge. अब किसी judicial magistrate या civil judge के पास केस जाएगा, so he has to decide it according to his judicial wisdom. जो facts and circumstances हैं उसका jurisdiction क्या है. मतलब jurisdiction मतलब मजिस्ट्रेट या सिविल जज का jurisdiction ये है कि तुम केस को सही सही डिसाइड करो, या फिर ये है कि तुम केस को डिसाइड करो, फर्स्ट वन या सेकंड. सही सही डिसाइड करो ये तो हो ही नहीं सकता. अगर ये होता कि सही सही डिसाइड करो, तो जब भी वो अगर गलत केस डिसाइड करता तो वो सस्पेंड हो जाएगा, या फिर सम लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट हिम, फिर तो अपलेट प्रोसीडिंग्स की जरूरत ही नहीं थी. So what is required is, our expectation is always there that it will decide rightly, but here we are talking whether it is law or not. We always expect that the trial court will decide the case rightly, but whether it is a binding principle of law upon the judiciary is there or not. The answer is that the trial court decide the cases according to their judicial wisdom, and there is always a possibility that the trial court may commit some error in deciding the case, and therefore we have got the proceedings of appeal and up till the Supreme Court, and in the Supreme Court also it is up to the point of curative petition. एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसको आप रिव्यू करवाओ, और रिव्यू में भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्यूरेटिव पिटीशन डालकर उसके ऊपर फर्दर हियरिंग करवा सकते हो, मतलब रिव्यू का भी रिव्यू करवा सकते हो. बट नॉट इन ऑल केसेस ऑब्वियसली, देयर आर गाइडलाइंस ऑन दैट. बट यू सी दीज अपलेट प्रोसीडिंग्स, व्हाई आर दे? Because there is always an expectation that the trial court may do some wrong decisions. Therefore, the corrections are required through the appellate proceedings. So, we do not expect that the trial court or any court to decide the cases with the 100% accuracy or perfection. मान लो अगर कोर्ट ने गलत डिसीजन दे दिया तो किसी एक व्यक्ति का तो राइट वायलेट हो गया दो पार्टियों में से. अब उसकी वजह से उस कोर्ट को अगर आप लाइबल करें, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ऑफ आर्टिकल 32 यूज करें, बिकॉज इट इज वायलेटेड द फंडामेंटल राइट्स एंड इट इज स्टेट, देन इन दैट केस ऑल जजेस विल हेजिटेटेड इन डिसाइडिंग द केस. ए जज विल हेजिटेट इन डिसाइडिंग द केसेस, द फियर ऑफ एक्शन अगेंस्ट हिम, बट इन एक्चुअली द जजेस शुड बी केप्ट फ्री while in hearing the cases and deciding the cases, so that they could apply their mind freely and in a healthy manner. The very fear of taking action against him in a normal circumstances should not be there. So the very jurisdiction of the court is, listen it carefully, so the very jurisdiction of the court is to decide the cases before it, rightly or wrongly. Expectation is always there that you should decide it rightly, but that is not a binding legal principle that you have to decide it rightly. So jurisdiction is not to decide rightly. Jurisdiction is to interpret the law and decide the case to the best of your judicial wisdom. To the best of your judicial wisdom. और क्योंकि उनका jurisdiction ये नहीं है कि तुम सही ही डिसाइड करो, अपने विजडम से बेस डिसाइड करो. So therefore you cannot say that it is they are consciously violated the fundamental rights. And if you cannot say that, then how will you can take the action against the
judiciary for the violation. हाँ, अगर मेलाफाइड एक्शन लेते हैं तो उसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन एक्सेट्रा हो सकता है, बट दैट इज a different thing. But when the normal decisions are taken by the trial court, high court, etc., अगर गलत भी डिसाइड किया, someone rights is affected also. For example, say कोर्ट में किसी एक्यूज के खिलाफ चोरी का इल्जाम था, and the case is going on in the court before the magistrate. जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने हियरिंग किया, ट्रायल किया और चोरी के इल्जाम में उसको कन्विक्ट कर दिया. अब दिस पर्सन इज पुट बिहाइंड द बार्स. मान लो उसको बेल नहीं मिला. After the conviction, it not get the bail from the appellate court, and therefore he is behind the bars. अब appellate court decides the case in 3 years या 2 years suppose. 2 साल बाद appellate court ने decide किया and acquitted him from the charge of theft. अब 2 साल तक ये बेचारा अंदर है. अब इसका राइट तो वायलेट हो गया. His right to personal liberty has been violated. And if you say that the judicial magistrate is a state, then obviously the legal action can be taken against the judicial magistrate. But that will not be proper because the court has to be fearless while deciding the cases. Even if there is a wrong judicial wisdom, even then the court has to be fearless while deciding the cases. अगर fear of action आप कोर्ट के ऊपर डालोगे, it was not a mala fide decision. We are talking about the normal decision as per the wisdom of the court. तो उसके ऊपर अगर आप डर डालोगे कि नहीं, अगर तुमने गलत किया तो तुम्हारे ऊपर एक्शन हो जाएगा, तब तो they will not feel free to decide the case. And therefore, as a matter of policy also, you will provide the mental freedom to the court. As a matter of policy also, to provide the mental freedom to the court to decide the cases. Plus, also because of the technical fact that the court has the jurisdiction to decide the cases and not the jurisdiction to decide always rightly, because you have got the appellate proceedings etc. also. जबकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर हमेशा एक jurisdiction होगा, that you have to make a good law in the spirit of the constitution. Number 2 में the executive, you have to implement the law effectively and properly, and you should not violate anyone's rights. And since there is a limitation upon, always there a limitation upon the executive and legislature, so if they violate, you can take action against them. But if the judiciary violates, then the action is not required, and therefore you kept the judiciary out of the purview of state in its judicial functions. But in administrative functions, since it is acting as an administrator, because it is not deciding the cases there, so the whole logic which we have seen here will not apply in this case, in administrative function case. So it is considered to be state while doing its administrative functions. So write it down. ये books में clearly नहीं मिलेगा आपको. Write down, in the case of judiciary, in its judicial functions, the jurisdiction of court is not to decide the cases rightly only. Rather, the jurisdiction is to decide the cases upon interpreting the law to its best judicial wisdom. And therefore, even if the court decides the case wrongly, it will not be said to have concisely violated the fundamental rights of a person. It will not be said to have consciously violated the fundamental rights of a person. Rather, such wrong decisions are always subject to correction through appellate proceedings. There is no mandate upon the judiciary while deciding the cases not to violate the fundamental rights as such, though there is an expectation that it should not pass wrong decision. Though there is always an expectation that that it should not pass wrong decisions. Write down the next paragraph. Moreover, if judiciary is brought within the purview of state,
then there will be a fear element upon the judiciary that action can be taken against it if a wrong decision has been passed. Therefore, to keep the judiciary fearless in deciding the cases, it should not be brought within the definition of state. So that's it for this point. Now let's see the judicial evolution of the concept of the definition of state. This topic is not much relevant as such for the exam purpose. In the Article 12, in the beginning, शुरू में we found so many things written: the executive, the central government, the state government, the legislature, the local bodies. उसके बाद it was written the word other authorities. Now we have interpreted what do you mean by the word other authorities. So by the Supreme Court and High Court judgments, what we initially found, since these are all having one common element, the principle of adjustum generis will apply. adjustum generis का मतलब है बहुत सारे कैटेगरीज लिखे गए हैं, उन सब में एक कॉमन फीचर है, तो ये है जो उसमें भी वही कॉमन फीचर होगा. फॉर एग्जाम्पल से those who are studying the constitution or the law in a law class, they all are the students of law. तो उसी प्रकार से अगर कोई नया स्टूडेंट आ जाए लॉ क्लास में, तो उसमें भी वही कॉमन फीचर होगा, दैट ही इज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ. सो दैट इज ए प्रिजम्पशन दैट ही इज ऑल्सो ए स्टूडेंट ऑफ लॉ. So what we initially thought, that all these bodies have got one common element, and that is they are all sovereign bodies. And since they are all sovereign bodies, sovereign मतलब संप्रभु, जो अपने लिए खुद डिसीजंस ले सकता है, वो सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है. क्योंकि हमने पाया कि ये सारी बॉडीज अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं और सेल्फ सस्टेन्ड हैं इन टेकिंग देयर ओन डिसीजंस, अपने निर्णय खुद ले सकते हैं. तो हमने एडजस्टिम जनरस का सिद्धांत लगाया और हमने कहा कि जो अदर बॉडीज हैं, अदर अथॉरिटीज में भी वही बॉडी आएंगे जो कि सॉवरेन है, क्योंकि सब में सॉवरेनिटी का फीचर है. अदर अथॉरिटीज में भी वही आएगा जो सॉवरेन है. ओनली दोज अथॉरिटीज विल फॉल इनटू other authority which is sovereign body. As for example, universities, the electricity board, etc. are not sovereign bodies, and therefore several high court decisions were there in which it is decided that universities and electricity boards are not state because they are not having the features of sovereignty, whereas the principle of adjustum generis requires that they all should have one common principle, and that common principle is sovereignty. And since university is not sovereign body, electricity board is not sovereign body, so that cannot be considered to be state under Article 12, and they will not fall under the heading other authorities. तो इसको अगर सिंपल भाषा में समझो कि बहुत सारी कैटेगरीज लिखे गए हैं और सब में एक कॉमन फीचर है, तो बाकी के जो कैटेगरीज हैं जो ओपन हैं, डिफाइंड नहीं हैं, उनमें भी वही कॉमन फीचर होना जरूरी है. जिस प्रकार से किसी स्कूल में अलग अलग साइड्स होती हैं, साइंस साइड, मैथ साइड, बायो एंड मैथ, तो उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स तो कॉमन सब्जेक्ट है, वो कॉमनली स्टडी करेंगे, बट मैथ स्टूडेंट्स विल स्टडी टुगेदर इन द मैथ क्लास एंड बायोलॉजी इन द बायोलॉजी क्लास. अब मैथ क्लास में अगर कोई स्टूडेंट बैठा है तो इट विल बी कंसीडर दैट दे आर मैथ्स स्टूडेंट्स, अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट आ भी जाता है तो. और इफ इट इज नॉट ए मैथ स्टूडेंट, देन द टीचर आस्क देम टू go to your respective biology class because they are of not the same category. उसी प्रकार से फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट है, उसमें जो भी बैठेगा, whether he is having biology or math, he would be called the science student because they are having the same category. Only difference of is one subject. And when we further classify the science category, then it is biology or maths. तो उसी प्रकार से यूनिवर्सिटी और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं. दे आर नॉट इंडिपेंडेंट बॉडी, they are controlled by the government, but they do not have the sovereignty का feature, and therefore they will not be considered to be the state. But later on what happens is
This is the first phase, initial phase, how we decide what will come under the word other authorities after the commencement of the constitution. But धीरे धीरे what we realized was कि आर्टिकल 12 में एडजस्टिम जनरस का प्रिंसिपल लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम जिस कॉमन फीचर की बात कर रहे हैं वैसा कोई कॉमन फीचर है ही नहीं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर एक्सेट्रा ये सॉवरेन बॉडीज हो सकते हैं, ऑब्वियसली नॉट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, बट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन बी सॉवरेन बॉडीज. But local bodies, the panchayats and the municipal corporations, they are not sovereign bodies. The local bodies are not sovereign in themselves, and therefore the feature of sovereignty is not cutting across them, not cutting across all of them. And therefore next phase में हमने क्या किया, हमने adjustum generis का principle reject कर दिया. We said that adjustum generis principle will not apply because there is no common feature between them. Now we started looking to something else. There should be some other test. And the next test in the third phase we evolved was that any authority which is created by the constitution or any authority which is created by the law. कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएट करते हैं या फिर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर स्पेशल लॉ बनाकर क्रिएट करता है, जैसे ONGC, FCI वगैरह. Any authority which is created by the constitution directly or created by law by enactment by the parliament or the state legislature will be called state. कोई भी ऐसी बॉडी जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्रिएट कर रखा है या फिर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने अलग से लॉ बनाकर क्रिएट किया है, ऑब्वियसली वो क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट बॉडी. सो उन्होंने अगर क्रिएट किया है तो इम्पोर्टेंट होगा तभी क्रिएट किया है, and that is furthering the purpose of the parliament, and therefore it will be called state. So अब जो हमारा टेस्ट हो गया, that is not justum generis but it is how the body is created. So test is how the body has been created, whether it is created by the law or by the constitution or it has been created under the law. अगर कोई बॉडी अंडर द लॉ क्रिएट हुआ है, अंडर द लॉ मतलब जैसे हम सब ने मिलकर कोई कंपनी बनाने की कोशिश की और उसको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करवा दिया, या फिर हमने कोई सोसाइटी बना दी और सोसाइटीज एक्ट में उसको रजिस्टर करवा दिया. सो दैट इज नॉट क्रिएटेड बाय द लॉ, दैट इज क्रिएटेड बाय अस एंड दैट इज गिवन लीगल एग्जिस्टेंस बाय गेटिंग इट रजिस्टर्ड. सो दैट इज व्हाट क्रिएटेड अंडर द लॉ. लेकिन अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने डायरेक्टली किसी बॉडी को लॉ बनाकर क्रिएट किया है, सो दैट इज क्रिएटेड बाय द लॉ, or it is directly created by the constitution, that is also created by law. अब ये टेस्ट हमारे लिए यूजलेस है because that is not relevant us for now, क्योंकि अब तो हमारे पास प्रदीप कुमार विश्वास का बड़ा जजमेंट है, 7 judges bench. But still now the test was as to how the body has been created. If it is created by the law or by the constitution, then it is a state, or it is created on its own under the law by registering under the law, then it is not the state. बाद में हमने इस टेस्ट को भी छोड़ दिया, और यहाँ पर जो आपका केस था RD शेट्टी, रमन्ना दयाराम जो हमने लिखा था, इस केस में वी फाइनली मेड द टेस्ट. इस केस में वी फाइनली केम अप द टेस्ट इज नॉट एक्चुअली हाउ इट इज क्रिएटेड, बट द टेस्ट शुड बी व्हाई इट वाज क्रिएटेड. टेस्ट इज नॉट कि क्रिएट कैसे हुआ, टेस्ट इज क्यों क्रिएट किया या फिर क्यों क्रिएट हुआ. और जब वाई की बात करते हो तो यू रिमेम्बर दैट इज वेयर द लिंक ऑफ फंक्शनैलिटी कम्स इन. क्यों क्रिएट हुआ, क्या उसको स्टेट के फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए, स्टेट के फंक्शन को फर्दर करने के लिए क्रिएट किया गया है, और क्या स्टेट ने कॉन्शियसली उसको अपने पर्पजेज के लिए क्रिएट किया, अपने आर्म या इंस्ट्रूमेंट की तरह क्रिएट किया, या फिर क्रिएट मान लो अपने आप भी हो गया लेकिन स्टेट उसको कंट्रोल करती है. सो इट इज हियर दैट फंक्शनैलिटी प्लस इंस्ट्रूमेंटैलिटी टेस्ट वाज इवॉल्व्ड, और ये टेस्ट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. सो दैट इज द हिस्टोरिकल जुडिशियल एवोल्यूशन. फर्स्ट वन एडजस्टम जनरस. In the next phase, the adjustum generis principle was rejected because there is no common principle of sovereignty, particularly in the local bodies. Then the issue was how it has been created by the law
state under the law, not any state. Then this also we gave up and said that how it is created is not the test, but the test is as to why it was created. So focus was more upon the functions and the facts whether as to whether it is an agency or instrumentality of the state or not. और अभी तक हमारा यही टेस्ट चल रहा है एंड दैट इज लॉजिकली करेक्ट टेस्ट। अब इस सीक्वेंस पे आपको बहुत सारे जजमेंट्स और पॉइंट्स मिल जाएंगे बुक्स में, बट द ओवरऑल क्रक्स इज दिस वन ओनली। सो स्टेजेस मैंने बता दिया आपको, पॉइंट्स वगैरह आप देख लेना बुक्स में से नेट पर। आईएएस में ये एक दो बार पूछा था बहुत पहले, दैट व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट, व्हाट इज द टेस्ट फॉर डिफाइनिंग अ स्टेट एंड व्हाट इज द जुडिशियल एवोल्यूशन ऑन दैट कॉन्सेप्ट। सो यूपी वगैरह में शायद पूछ ले, वैसे उसमें भी चांस नहीं है पूछने का, लेकिन अगर बाई चांस पूछ ले सो यू विल मेक सम पॉइंट्स फ्रॉम नेट और बुक, बट द ओवरऑल क्रक्स और द स्टेजेस आर दिस। अब व्हाट विल बी ए स्टेट एंड व्हाट विल नॉट बी ए स्टेट, वो पीटी में क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, तो इसके लिए बुक्स में से देख लेना या नेट पे देख लेना। सो यू विल प्रिपेयर ए लिस्ट योरसेल्फ व्हाट हैव बीन डिक्लेरेटेड टू बी स्टेट। So that's it for this topic and this article 12. Thank you for watching this lecture.